AKASHVANI Riro 1000 Man ki bat wongkuka ngkazinyo selo lak mekaladano politics kron selon ran genyo special campaign tse bingung kaje modele ngkazi tamidang gazoshe takinki 10 hensro kuhu Swami Vivekananda knyujon karafo wongkuka Delhi ki Viksit Bharat Young Leaders Dialogue binra modele tashashe ngkazile chengetri generation jonzore kuhu nyutse Swami Vivekananda Knyujong karafutsu kipe yu de binhe ngkazinyo selo kor kuhu kalale Viksit Bharat Young Leaders Dialogue nyutsu binti lo tsidanyo selo yehu kajepeno Bharat Mandapam ki dialogue binra modile zo sinshe lo hile ngkazi sidyotifshi kehe selo da wongku kawa kipe tsiti ato kilonsrele technology sanghe selo dano Pashinyu dang kachepeno digital kasakasitho dangzi nyu kanilun ranzi hishbin. International Day for Elimination of Violence Against Women tsile ntu rafabin. Ntu nye juji tsile minutes tere nyu taninyu mebushigahe. Nyu me teo taninyu kantekando kilan ran. Jonkarafa tsenyu sorkarile ntu New Delhi ki ato apkwe bahana nihi national campaign tse khinshe shabin campaign hile United Nations Women le kacho Ministry of Women and Child Development lo rural development dane around century bin lo campaign hile sorkari stakeholders lo kachilwa tamidano kache kono no the news shik kacha theke he correction tse no indilan rant to me campaign wongkuka आप कोई बहाना नहीं फिल्म थमे चिकिपे थुकहिशे Women and Child Development Ministry le campaign sion nayi chitna 3.0 campaign chiko khinshe ka shi zoshe hagune Akashvani Kohima suminyon jolokata shadan sinilobin watse jolokata shadan ts thenon ragenyo X handles AIR News Alert lo AIR Kohima ts tenzino lo News on Air का उद्घाटन होगा और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ होगा। इसका विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। नमस्कार। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसी कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। हम आपको बताएं कि ये वैश्विक सम्मेलन आज से शुरू होगा और 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों की इस सम्मेलन में उपस्थिति रहेगी। साथ ही 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित सत्र होंगे, कार्यशालाएं होंगी। ऐसी ही एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में ये दर्शाया जा रहा है कि बीते वर्षों में हमारे देश में कृषि आधारित क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह की आत्मनिर्भरता हमने हासिल की है और किसान कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं जो बनी हैं, किस तरह से किन चरणों में वो किसानों तक पहुंचती हैं। इफको इसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और हम आपको बताएं कि सहकारिता मंत्रालय जो है, विशेष आयोजन ये उसका है 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। हमारा देश कृषि आधारित देश है और जो किसान हैं उनके कल्याण के लिए हमेशा से ही सोचा गया है, लेकिन कई बार ये जो प्रयास होते हैं ये असंगठित तरीके से होते हैं और बहुत अधिक जो विविधता है हमारे देश में, उसके चलते जो कार्य प्रणाली है उसमें भी बदलाव आता रहता है। तो किसान कल्याण को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की घोषणा तो की ही, साथ
साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए, देश की खेती को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए और कृषि पर निर्भर जो अन्य छोटे उद्योग हैं, जो अन्य छोटे व्यापारी हैं, उनके कल्याण के लिए किस तरह से काम किया जाए। और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं। उनके निर्देशन में, उनके मार्गनिर्देशन में सहकारिता मंत्रालय कार्य करता है। Yes, indeed, the 2024 International Cooperative Alliance ICA Global Conference has been held in Indian soil for the first time in 130 years. New Delhi is hosting cooperators from around the world who will explore the role of cooperatives in creating a collective, peaceful and prosperous future for all. There will be inspirational speakers and provocative panel debates, and delegates will cooperate their visions and strategies during multiple breakout sessions. The conference theme is Cooperatives Build Prosperity for All, celebrates cooperatives as people-centered, purpose-led and progress-driven enterprises. The event will be inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The program will also have the special presence of Honorable Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah. The event officially will launch the United Nations International Year of Cooperatives 2025, IYC 2025, in the presence of global leaders, academics and practitioners. The International Year of Cooperatives takes the theme Cooperatives Build a Better World to inspire cooperators worldwide to work together to strengthen international cooperative movement, of which the International Cooperative Alliance is the beating heart. And this 6-day event will see 25 sessions. There will be more than 200 speakers. 100 countries are participating in this, and there will be presence of more than 3,000 delegates at the Bharat Mandapam. Fostering inclusive economic growth, social equity, prosperity and sustainable development through primary agriculture credit societies is the motto of the Indian farmers cooperatives, and the delegates are going to talk on model bylaws for PACS, making them multi-purposeful, multidimensional entities, world's largest decentralized grain storage plan in the cooperative sector, establishing new multi-purpose cooperatives in uncovered panchayats, making primary agricultural credit societies, that is the PACS, economically vibrant and transparent, strengthening of PACS through computerization and building national cooperative database, PACS and common service centers for better access to e-services in villages, PACS as PM Bharatiya Jan Aushadhi Kendra for improving access to generic medicines at rural level, formation of new farmer producer organizations, that is FPOs, by PACS, PACS as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras, strengthening the urban and rural cooperative banks, innovation of the world's first nano urea and nano DAP, and revival of cooperative sugar mills. The Honorable Prime Minister will be inaugurating the global conference in just a short while from now. और हम आपको बताएं कि भारत मंडपम में, जो कि मुख्य आयोजन स्थल है, यहाँ पर गतिविधियाँ जो हैं वो लगातार जारी हैं। अन्य देशों के जो मेहमान हैं, प्रतिनिधि हैं, वो पहुँच चुके हैं, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का क्योंकि आगमन यहाँ पर होने वाला है, तो अनुशासन भी यहाँ पर बना हुआ है। सहकारिता की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता रहा है कि सहकार केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है, क्योंकि समाज के हर तबके को ये अपने साथ लेकर चलता है। और अब गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हो रहा है। हम आपको बताएं कि जो मंच है ये पूरी तरह तैयार है। मंच के पार्श्व भाग में कई तरह के लोगो हैं, जो आयोजक हैं उनके प्रतीक चिन्ह हैं, और मंच के मध्य भाग में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है। Yes, Neelam, here we'd just like to inform the listeners that the Honorable Prime Minister of Bhutan, Dasho Shering Tobgay, has arrived at
Bharat Mandapam, and he has taken his seat and is been greeted by the officials, and the Honorable Prime Minister is expected to arrive here very shortly. और जैसा कि हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को देखते हुए अनुशासन भी है। अन्य गणमान्य अतिथि जो हैं उनका आगमन जो है वो अपेक्षित है। मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति तो रहेगी ही, साथ ही जो सहकारिता मंत्री हैं माननीय गृह मंत्री जी, उनकी उपस्थिति भी होगी। भूटान के माननीय प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे जो हैं वो उपस्थित हैं मंच पर इस समय। फिजी के माननीय उप प्रधानमंत्री मनोआ खामिका की उपस्थिति अपेक्षित है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि श्री शोम्बी शार्प होंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अध्यक्ष श्री एरियल गुआरको की उपस्थिति भी अपेक्षित है। जो दर्शक दीर्घा है, और हम आपको बताएं कि भारत मंडपम जो है वो एक स्टेडियम की तरह से बना हुआ है, जो स्वरूप है बैठने की व्यवस्था है, तो पूरी तरह से ये भरा हुआ है। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर सहभागी हैं और प्रतिभागी हैं, दूसरे देशों से आमंत्रित विशेष अतिथि हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए भी हैं। और क्योंकि ये बहुत ही आम लोग जो हैं उनका अपना उत्सव है, हम रोजमर्रा की जीवन में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कई बार हम ये सोच भी नहीं पाते कि वो किस तरीके से हम तक पहुंचता है। उसे हम तक पहुंचाने के लिए किसान, छोटे उद्यमी, छोटे विक्रेता कार्य करते हैं, कई स्वयं सहायता समूह कार्य करते हैं। उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर सहकारिता मंत्रालय कार्य करता है और सहकारी संस्कृति ने लोगों को एकजुट किया है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में। और भारत में सहकारी क्षेत्र में जो नवाचार किए हैं, जो नए प्रयोग किए गए हैं, उनसे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। और ऑन रिकॉर्ड ये बात है, इसीलिए 130 साल का इतिहास है जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन। पहली बार ये आयोजन भारत में हो रहा है, वैश्विक सम्मेलन हो रहा है। उसकी वजह यही है कि दुनिया को दिशा दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे विचार भी हैं और कैसे विचारों को हम संस्कार में, व्यवहार में लाते हैं, वो उदाहरण भी हमारे पास है। तो ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय कार्य करता है, महिला सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलता है, छोटे व्यापारियों का कल्याण इसमें शामिल है। फिर डेयरी सहकारिता का जो अमूल मॉडल है पूरी दुनिया में ये अनोखा है, इसने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी है। स्वयं सहायता समूहों का कल्याण इसमें होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहकारी बैंक है उन्हें भी संगठित करके किसान कल्याण के लिए और छोटे व्यापारियों के कल्याण के लिए, सहकारिता क्षेत्र के कल्याण के लिए हर समय तैयार रखा जाता है। सहकार से समृद्धि, ये एक स्लोगन और एक ये उद्देश्य हमें दिया गया है जिसकी ओर देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार कार्य कर रहा है। Yes, Neelam, indeed. The International Cooperative Alliance is the voice of the cooperatives worldwide, and it advocates the interests and success of cooperatives and provides a global voice and forum for knowledge, expertise, and coordinated action. To implement its activities, the International Cooperative Alliance is organized with a global office which is based in Brussels, which also happens to be the capital of the European Union. And the ICA, the International Cooperative Alliance, has 4 regional offices, one in Africa, one in the Americas, one in the Asia Pacific, and one in Europe. There are 8 global sectoral organizations, and these organizations work in agriculture, banking, retail, fisheries, health, housing, insurance, and industry and services. There are 5 committees and networks which are based on gender, research, law, youth, and development. And as we also mentioned that in the 130-year history of the International Cooperative Alliance, this means this is a very old organization indeed, that the ICA Global Conference has been, for the first time, been hosted in India. And as we mentioned earlier, the function will be graced by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the Honorable Prime Minister of Bhutan, Shri Shering Tobge, the Deputy Prime Minister of Fiji, Shri Manoa Kamika, Shri Amit Shah, the Minister for Home Affairs and Cooperation, Mr. Shombi Sharp, UN representative to India, and the President of the International Cooperative Alliance, Mr. Ariel Guarco. The theme of the global conference is Cooperatives Build Prosperity for All, and India is celebrating it as Sehkar Se Samriddhi, and the
conference has been hosted by the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, which is an apex body of the Indian farmers fertilizers sector. And the farmers, of course, we all know, play a pivotal role in maintaining food security of India. And today, India happens to be one of the largest agricultural countries, whether it is wheat, whether it is rice, whether it is pulses, you name it, whether it's fruits and vegetables and exotic flowers, especially in the sector of horticulture. India is a huge name, and in the global food supply chain, India plays a very, very important role. And India's cooperatives, especially as my colleague Neelam Malkania mentioned, whether it is in the milk sector, that is dairying, and in sugar, it is well known. For the benefit of our listeners, we'd like to inform you that indeed India happens to be the largest producer as well as consumer of milk and sugar, and we are the second